carpeted Karakoram highway is a smooth ride from the magnificent tunnels, passing the lake as you move north of Karimabad towards the Athabad Lake. These amazing tunnels are a piece of modern architecture and enable safe traveling as the area is prone to landsliding. Athabad tunnels open new gateways of tourism in the region. The realignment project happens to be a masterpiece that restored the link between Pakistan and China. After the tragedy that led to the formation of Athabad Lake in 2010, a huge portion of the giant Karakoram highway was submerged in water. Athabad Lake does not have a romantic story regarding its formation. 3 gigantic glaciers, including a 35-mile-long Batura glacier, are positioned over the flooded towns. In the springtime, the snow melts down from the mountains into the lake. The turquoise Athabad Lake is a wonder in its own might. It is a beautiful lake that adds magic to the serene views of Hunza. One can never imagine that a disaster can also be beautiful. And Athabad Lake is a prime example of that. Spread over 700 meters with depth of 300 meters, this lake is nestled in the Rocky Mountains of Hunza Valley. Boating on the Athabad amidst the mountains, one sees how trivial everything is. The space you occupy in the world. The calm waters are also teaching a very important lesson. Don't stop, pave your way, and conquer it all. The stunning mountains around are set out like a perfect panorama, framed by the steel grey of the waters of Athabad Lake, making it a perfect painting. Traveling helps so much with learning, but it is important to live responsibly. Sustainable tourism is the only way forward. Hunza एक पूरी दुनिया में टॉप 10 टूरिस्ट डेस्टिनेशन में आता है। बहुत सारी और जगह हैं, घिजर है जिस तरह हम गए हैं, और नई नई जो वैलीज डिस्कवर हो रही हैं। तो अगर 1 करोड़ लोग हुंजा में 100 साल में समा सकते हैं, इसका मतलब 1 साल में हुंजा में 1 लाख लोगों को आना चाहिए। अब ये कैसे निकलता है? वो इस तरह निकलता है कि एक जगह के अंदर कैपेसिटी में चाहिए आपको उधर अकोमोडेशन कितनी है, और अकोमोडेशन जो आप बनाए वो कंक्रीट स्ट्रक्चर पे नहीं, ऐसी अकोमोडेशन जो हुंजा के एनवायरनमेंट को ना तबाह करे। आप कितनी अकोमोडेशन बना सकते हैं? क्या वो 1 कमरा और ऐड कर सकते हैं कि 1 लाख कमरे और ऐड कर सकते हैं? सो वो एक तो आपने कमरों को, अकोमोडेशन को देखना है। नंबर 2, उधर क्लिनिकल फैसिलिटी, बेडिंग, हॉस्पिटल बेडिंग कितनी है? 10 to 20 लोगों के लिए एक बेड होना चाहिए। तो अगर 1 लाख लोगों ने आना है और 20 लोग हो, तो इट मीन्स कि वी नीड 5000 बेड्स। क्या 5000 बेड्स हैं? फिर इस तरह पानी, 1 लाख लोगों के लिए कितना पानी चाहिए, कितना फ्यूल चाहिए, कितना खाना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर कितना चाहिए। तो ये सारी चीज़ देखने के लिए हमने हुंजा को देखना है कि हुंजा में अगर 1 साल में 1 लाख लोग आ सकते हैं तो 1 लाख से ज़्यादा लोग मत आए, क्योंकि अगर 1 लाख से ज़्यादा लोग आएंगे तो वो उस जगह को, उस कमोडिटी को, जो हुंजा एक टूरिज्म के लिए कमोडिटी है, उसको तेज़ी के साथ डिप्लीट करेगी और उसकी इन्वायरमेंट को, उसकी वैल्यूज़ को, उसके इकोसिस्टम को, उसके लोगों को, उसके कल्चर को, हर चीज़ को तबाह किया जाएगा। अगर हम एबी इनिशियो राइट फ्रॉम द बिगिनिंग इनको सस्टेनेबल टूरिज्म की गाइडलाइंस के ऊपर डेवलप करना शुरू करें, तो लेट मी टेल यू कि ये जगह महफूज भी रहेंगी, सीनिक ब्यूटी भी हमें देंगी, हमें अच्छा एनवायरनमेंट भी देंगी, लोगों को भी प्रोटेक्ट रखेंगी, उनकी वैल्यूज, कल्चर को भी प्रोटेक्ट रखेंगी, और ये बहुत दूर तक इसकी सक्सेस जाएगी।